स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बोर्ड्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ लेट्स सी, आई विल राइट few examples and then I will explain you what is homologous series. We all know how to write the members of alkanes: CH4, then C2H6, then C3H8. We have that general formula which is CN H2N plus 2, C4H10, this is C5H12, then C16H14. See, can you see one common difference here? In the adjacent member, how many difference of carbon? We have one carbon difference. And how many difference of hydrogen? We have two. In the second case, you can see there also a difference of CH2 unit. In this case also we can see there is a difference of CH2 unit. So basically homologous series is a series of organic compound in which adjacent member differ by CH2 unit. We have seen it here कि CH2 यूनिट से एडजेसेंट मेंबर डिफर करते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट मास, दैट हाउ मच मास डिफरेंस दे हैव. कार्बन हैज मास 12 एंड हाइड्रोजन हैज 1, सो देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, सो दे डिफर बाय 14 यूनिट मास. किससे? 14 यूनिट मास से वो डिफर करता है. सो वी कैन से दैट होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट. किससे डिफर करते हैं वो? CH2 यूनिट से. एंड दे डिफर बाय 14 यूनिट मास. कितने मास से? 14 यूनिट. अगर मैं कुछ केमिकल की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करूं इसकी, तो देखो अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात करें, सो हमने क्या पढ़ा अभी कि 14 यूनिट का डिफरेंस एंड दे हैव 14 यूनिट मास का डिफरेंस, CH2 यूनिट का डिफरेंस. एंड क्या इन सभी को बनाने का जनरल फॉर्मूला सेम था? सो वी कैन से दैट दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला. करेक्ट. अब देखो अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो अगर आप अल्कोहल का बनाओगे, अल्कोहल के केस में सभी में क्या होगा? OH फंक्शनल ग्रुप होगा, तो सभी की प्रॉपर्टीज भी कैसी आएंगी? सेम. सो वी कैन से दैट दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप देख सकते हो as we are moving down, as you are going down, we can clearly see here C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14 कि आपके नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मास इंक्रीज होगा. अगर मास इंक्रीज होगा तो इनके बीच के वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होंगे और इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा? इंक्रीज. सो देयर इज, वी कैन सी द ग्रेजुअली इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड द लास्ट इज, इनको जो प्रिपरेशन का मेथड है वो भी क्या होता है? सेम. सो दे हैव अ सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन. हम क्या बोल सकते हैं कि इनका सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है. सो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 unit and they have a 14 unit mass difference. They have same general formula. Their method of preparation is also same. They have similar chemical properties as they have same functional group, and there is a gradually increase in physical properties. Now you can see here it is a homologous series of alkane: CH4, then C3H6, then C3H8, C4H10, methane, ethane, propane, butane, pentane, so on. They both differ by adjacent member by CH2 unit. So this is a homologous series of alkanes. Now we can make any homologous series if we know the general formula.